This side. Shahid, this side. Aruna from Bollywood Society. Hi Aruna, how are you? I am good. How are you? So शायद my question is for you कि आपने कई एक्ट्रेसेस के साथ फिल्मों में काम किया है, डांस सीक्वेंसेस किया है, डांस म्यूजिक किया है, तो ऐसी कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिसके साथ आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी महसूस नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ डांसिंग? ये बैठी हैं मेरे साथ पूजा हेगड़े, इनके साथ बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई मुझे डांस करके, बहुत मज़ा आया। हमने कट के बाद ये वाला स्टेप भी किया। विच इज दैट पूजा? Yeah. So she loves dancing and so do I. So we had a lot of fun on the sets of Bhasar Machan. Okay, thank you. Thank you, Aruna. All right, for Pooja, we have Kunal Kothari from IWM Buzz. Hello, hi, this is right here. Hi Pooja, first of all, congratulating the entire team. The trailer looks fantastic. And Pooja, my question for you is, having played, as you mentioned, and we know that you're playing a journalist, in the film, and the kind of the vibe of the film is obviously intense, as you also rightfully mentioned. My question is that when you play the character, and there were obviously intricacies that come with playing a journalist, what was the kind of brief given to you that it has to match the intensity, or yours is a more restrained form of making sure that you become an aid to Shahid's character, or it's more like I'll be the propeller of whatever happens in his life later? I mean, I've always been check. I've always been attracted to this investigative journalist, that kind of a character. But I think the brief, in films like Spotlight and these kind of films, when I watched them, I just thought I love the intensity and I like the urge to know and find out the truth. And sometimes, with people like that, they tend to be blinded by everything else except for finding this out. But I think the brief that Roshan sir and I, when we first met, we thought we'll meet for 5 minutes, and then we went on talking about our love for films and David Fincher and all these kind of films. But I think the one brief Roshan sir gave me was, I want to see Diya and I don't want to see Pooja. And that was something that I strived to achieve. I wanted her to be authentically herself, be strong but not rude. And she's at the same time, she's not afraid of speaking her mind. So when you watch the film, you will understand and you will kind of know what I'm talking about. But she's at the same time got a little softness. It's got, I don't know if that answers your question. So I think that's what I strive for, just being authentically herself. And I think she's pretty much the middle class girl of today who's like, this is what we see in women today. And I think that's what I hope, Roshan sir, I've done justice to portray or Diya, and I have followed your brief. Thank you. All right, for Siddharth sir, we have Sejal here. She has a question for him from Dainik Bhaskar. Sejal. Hi. Hello, Siddharth. Hi. Can you hear me? Yes. Yes. Hi, I'm Sejal from Dainik Bhaskar. Yeah, my question is to what inspired you to produce Deva, and how did casting process go? Well, I think the story is what inspired me most. So from the time that I met Roshan, it's a subject that we've been discussing from the very first time that we met, and the story is incredible, and that inspired me. And then secondly, watching his filmography, which is so incredible. He's such an iconic filmmaker from Malayalam cinema, the films that he's made. So the confidence that that one is a story, then two is the ability of a director to deliver on that story. His filmography inspired that confidence completely. And so that's how the process began. And then when we went to Shahid and he felt exactly the same way, that's how the whole project came together. So, but it started with the story. All right, for Roshan sir, Jia from Hangama. Hi Jia, you have a mic? Hi, Roshan sir. Hi. First of all, good afternoon. My question for you is, since the process of filming Deva was for 3 years, in the last 3 years there are a lot of thriller and action films that are coming from both sides, north and south. Some have performed exceptionally well, but some did not. So when you were making the film,
did that sort of that environment was affecting you while you were making, or was any decision was taken while filming on that fact? I always believe in myself. I believe the instinct of mine. So action film, whether the other films run or not run, that's not bother me. For me, Deva, the actions in this film, all the action I wrote myself. So the actions should be the part of the screenplay. It's not for the sake of the action. We've not added any action sequence. So all the action sequence is the part of the screenplay story structure. So I don't worry about other films and all that. For me, Deva is important. If you people are enjoying it, I'm quite happy. That's it. All right, the next one is for Mr. Umesh Bansal, Narendra Bhutani from Punjab Kesari. Sir. My question is to Shahid Kapoor. Can I take my question, Shahid? Ete, on your right. हाँ. शायद हमने आपकी हैदर देखी और आज ये ट्रेलर देखा, दोनों में बहुत मजा आया. कुछ आप बता सकते हैं दोनों रोल्स के बारे में, कुछ क्या डिफरेंट, हाउ डिफरेंट इट इज? सर हेयर कट सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है सर. बट शायद उसकी वजह से आपको थोड़ी सी याद आई. बट इसमें एक्चुअली दो लुक्स हैं देवा की, जो एक थोड़ी सी बहुत सटली रोशन सर ने एडिट में डाली है, क्योंकि जब वो यूनिफॉर्म में आता है तो ही हैज़ टू बी क्लीन शेवन. और दूसरी लुक है जो रगेड, रफ, किसी की नहीं सुनता टाइप, सनकी टाइप, जो पुलिस वाला गुंडा टाइप, व्हाटएवर यू वांट टू से, उस टाइप का एक लुक है. लेकिन लुक्स जो है वो तो सिर्फ इनिशियली आपको एक फील देने के लिए होता है. उसके आगे तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, कहानी का मूवमेंट है, कैरेक्टर का टॉप लेयर होता है, लेकिन फिर सब टेक्स्ट होता है, थर्ड लेयर होता है. तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है. ये फिल्म की कहानी और इस बंदे का हेड स्पेस, ये दोनों कनेक्टेड है. ऐसे बहुत कम फिल्में होती हैं, जैसे डेविड फिंचर, शी सेड, आई थिंक रोशन ऑल्सो रियली एंजॉयज डेविड फिंचर्स वर्क. तो एक चीज़ होती है कि जब आप एक फिल्म बनाते हैं जो कैरेक्टर ओरिएंटेड होती है, जिसमें परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर एंड द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर, वो दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती है. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देवा, शायद हैदर में भी कुछ हद तक ये चीज़ थी, उसका जो मूड था, पर उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे. इसके अंदर आई थिंक देवा का जो इनर हेड स्पेस है और जो वर्ल्ड बिल्डिंग रोशन ने की है, वो हमेशा कनेक्टेड है. तो हमारी फिल्म में जो मौसम होगा या जिस तरीके की लाइटिंग होगी, जो अमित यहाँ पर हैं, जो हमारे साथ हैं, अमित रॉय, बिग राउंड ऑफ applause फॉर अमित एंड केम, who is also here, the entire team is here. तो वो चीज़ें बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं अगर आप फिल्म को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, क्योंकि इस फिल्म में सेकंड और थर्ड लेयर है. आजकल कई सारी ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़ी नॉइजी होती हैं और प्रोमो में बड़ी आवाज़ हो जाती है, बट आप 2.5 घंटा जब बैठते हो तो ऐसा लगता है कि उतना ही मिला जो प्रोमो में देखा. कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको फिल्म देखने के बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं. तो मैं ये लिबर्टी लूँगा ये कहने की कि मैंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं, ये डेफिनेटली उस कैटेगरी में आती है कि इस फिल्म को देखने के बाद, एक तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो है, दैट्स द रीज़न आई डिड दिस फिल्म. मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट इट्स गोना बी वेरी सरप्राइजिंग. बट ये उस कैटेगरी में आती है फिल्म जिसके बारे में आप देखने के बाद भी बात कर सकते हैं. शायद सेकंड टाइम भी देखने का मन करेगा उसको पूरी तरह समझने के लिए. बट साइमल्टेनियसली बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, कहीं पे भी पेस स्लो नहीं होती है, और बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है फिल्म की और कैरेक्टर की हेड स्पेस की. तो फॉर मी दैट इज व्हाट देवा इज. इट इज द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर इन द वर्ल्ड दैट हैज बीन बिल्ट अराउंड बाय रोशन, and the thriller aspect which constantly keeps you wondering कि हो क्या रहा है. That's what it is. Thank you so much. Narendra sir, your question. हेलो सर. पहली बात तो ये पंजाबी और बनिया, ये जो कॉम्बिनेशन हो जाता है ना सर, कमाल का कॉम्बिनेशन हो जाता है. एंड आई एम डैम श्योर कि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कपूर्स का एंड बंसल्स का, वो धूम मचाने वाला है. सो हर एक पंजाबी को एक बनिया चाहिए होता है जो बिजनेस संभाल सके, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा मुझे दिख रहा है. अभी हमने टीजर देखा है, अब ट्रेलर भी देख लिया है और धूम मचाने वाला है. आई एम डैम श्योर. सो सर, उमेश सर, ये आपसे सवाल है कि कैसा है रिश्ता आपका पंजाबियों के साथ? मतलब पूरा जो कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आपके हिसाब से आप कब जुड़े इनके साथ में इस प्रोजेक्ट के अंदर? एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द कपूर्स? आप पंजाबी हो? हाँ जी, आप पंजाबी है जी. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. कमाल की बात है, फिल्म मेकर मलयालम है लेकिन ये बंदा पंजाबी घुसा ही ले आया.
यही हमारी बेस्ट चीज होती है ना? पंजाबी आ गए ओए वाह I think this is the most entertaining question I've ever had. But मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा, यहाँ ऑल इंडिया है, अगर आप स्टेज पे देखेंगे. So it's been a great experience. Siddharth comes with a lot of experience in the industry. He's already has the stature and he has the portfolio जिसमें हम लोगों को quality check is great, creative sense is great. He knows which projects to mount. He's been a partner whom we have fully relied on, and we've gotten the great results that we've seen on the screen. But I would again say, ये पैन इंडिया फिल्म है. हमने नहीं सोचा था कि ये पंजाबी और बनिया मिक्स हो रहे हैं. But you pointed out right. So hopefully this is the winning combination. Thank you so much, sir. All right. So we have a question for Pavel from Kunal from India Forums. रिश्ते बहुत कराते होगे आप ऐसे, है ना? इसका Yeah, hi again. Pavel, it's here. Right here. My hand is moving. Yeah. Hi. Hi. No worries. Hi. Firstly, my actually question is for both of you and you and Shahid as well, because there was a glimpse, obviously, towards the end of the trailer, which is, visible, the kind of, there will be a bond that the both of you share. And I think Shahid is known for, his bromance moments over the years, in his films and shows. So I want to know that, the kind of experience in that context, that, whatever is the dynamic that you'll have in the film, but how does it translate off screen as well, and how has it been for the both of you? I think my whole मेरा पूरा जो खाना था सेट का वो sponsored by Shahid. Shahid has fed me around I think 10-15 दिन. He has got food for me. Yeah, सबको नहीं मिला. So Shahid used to get me a full dabba, like a whole buffet for me. हाँ, मेरे घर पे cook नहीं था उस दिन 10 दिन के लिए. So Shahid was kind enough to get food for me, which was lovely. And मुझे नहीं पता था मेरे कॉन्ट्रैक्ट में वो भी ऐड हो गया. So nicely done. But I think our romance on screen was fantastic because we got along very, very well off screen. I met Shahid I think before we shot. 10 days before I think Diwali पे कहीं पर and I told Shahid कि did you know that time I was doing the film? Shahid knew. But that's the time I told him that I've grown up, copying his dance steps, and I joined Shamak because Shahid was in Shamak. So always been a big fan of his. Always been a big fan of Roshan sir. And Siddharth sir, I just want to say you were the first person who called me after Thappad release. So that was the biggest thing that I could get a call from you. So I've worked with this wonderful crew, and Shahid was literally the backbone of this. So thank you. Thank you so much. All right, the next one is